Hello and namaskar. Welcome to Pristine IAS. So this is your lecture number 2 of full lecture series, which we have started on 5th July. 5th July the orientation class thila, then we have taken one lecture yesterday. From today onwards, we will take multiple lectures and each session will be having 25 to 30 minutes. ଯଦି 25-30 minutes करियो, it is easier for you. जेबे भी free थिबे, you can watch it. So last class we have covered underpinning of the constitution. Seta sorry. After that, we have completed the evolution. Then we have talked about the sources. Then last time I the basic structure of the constitution and importance of basic structure doctrine. Ajir class we will start from important amendments. ଯେତେ भी important amendment ଅଛି up to the Nari Bandhan Adhiniyam, जोटा 106th amendment, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା important amendment ଅଛି we will cover it. So we'll start with the very famous and very first Amendment Act, which was amended in the year 1951. Just Constitution amara hela 26th January 1950 re, and just after 1 year there is the first amendment. What is the background of the first amendment? See, the government following the implementation of the constitution, the government's radical land reform legislation and zamindari abolition law faced severe roadblocks in courts. Dita jinso ko nei khutla kon thila gotla government's radical land reform setala start hetila au zamindari abolition. Landmark judgments like State of Bihar versus Kameshwar Singh struck down state land reforms for violating the fundamental rights to property, जोटा कि आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट रो पार्ट थिला टू हैव द प्रॉपर्टी, बट एटा को एबे सेटू हटेकी लीगल राइट्स कर दिया है. Concurrently, the state restriction on free speech on the case of Ramesh Thapar versus State of Madras were invalidated. To prevent judicial review from stalling socio-economic transformation, the provisional parliament enacted this amendment. Fine. So, एथिरे what is the significance? It introduced 31A and 31B, creating the infamous 9th schedule to shield agrarian and redistributive laws from judicial scrutiny on the ground of violating fundamental right. गोटे आमर अच्छी शेड्यूल 9 आगुरी थिला शेड्यूल 9 रे जहाँ गवर्नमेंट रखिदब ता ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो पारिबो नै. बट सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट कौन आसला? फाइनली जजमेंट आसला केशवानंद भारती केस, जोटा 24 एप्रिल 1973 आगुरु जहाँ किछि शेड्यूल 9 ने थिबो दैट इज तापरे जुडिशियल रिव्यू हो पारिबो नै. बट दिस इज द कट ऑफ डेट 24 एप्रिल 1973 पर जहाँ किछि केसेस आसीबो सबुथरे जुडिशियल रिव्यू हो पारिबो. फाइन. दिस इज द significance of first amendment. से माने आर्टिकल दीटा इंसर्ट कले 31A और 31B और 9th शेड्यूल क्रिएट कले. The intention was right. They want to shield the agrarian and redistributive laws. से जो लैंड रिफॉर्म्स हो किंबा अलगा किछि redistributive laws जोतरे से चाहूतले कि किछि लोक खातरे एक्सेस अमाउंट ऑफ वेल्थ न रही कि समस्त पाखरे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हेकि रहू. It also amended Article 19(2), adding 3 new ground of reasonable restriction on free speech. कौन हला? उडला public order, friendly relation with foreign state and incitement to an offense. तमे किछि तमरो फ्री स्पीच रो अधिकार अछि, बट तमे एमिति किछि कथा कहि कि जदि
law and order create माने situation create करिवो then it is restricted. ଆମର फ्रेंडली नेशन जे अछन तांका विरुद्ध तम जदि एमती किछि माने कमेंट पास करियो जोटा हम रिलेशन को खराब करियो that is also restricted. And third one is incitement to an offense. You are inciting someone to do some offense. This set of a historic decade long institutional tussle over the boundary of parliament amending power versus judicial review. एटा हमें काली देखिथिले हमें doctrine of basic structure तला हमें कवर करथिले. We have seen that thing. ठीक अछि एटा ला गुटे पार्ट. Okay, there is a second angle to it. देखो 2023-24 गोटे क्वेश्चन पचारथिला ए फर्स्ट अमेंडमेंट ऊपर. While celebrating 75 years of Indian constitution, there is discussion on the women in 9 yard of sari who triggered first amendment of the constitution. এই কেসটাকে সে কইছি elucidate the case. The discussion surrounding the women in 9 yard sari who triggered the first amendment refers to Srimati Champakam Durarajan, a Brahmin woman from Madras. In 1950 कौन प्रोब्लेम होता ना 1950 ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପକମ୍ ଦୁରାଇରଜନ she was an aspirant of medical college मेडिकल पढ़िया चाहूले. तो जब मेडिकल कॉलेज रे एडमिशन पे से गले तो तांकर एडमिशन एथि ही पालानी बिकॉज तांको पाई जतिकी माने तांको कैटेगरी पे जतिकी सीट रिजर्व थिला द सीट वाज फिल्ड. बाकी जो सीट थिला दैट इज रिजर्व फॉर अदर कैटेगरीज. So her legal challenge to caste based quota which led directly to the landmark Supreme Court ruling of State of Madras versus Champakam Durarajan 1951 case. कौन होता है in 1927 the Madras presidency issued a communal government order that distributed seats in state-run medical and engineering colleges based on strict caste and community quota. तो जति की 100टा सीट 200 सीट जहाँ भी सीट अच्छी इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस दैट इज रन बाय स्टेट ओन माने गवर्नमेंट कॉलेज रे. तो से माने कास्ट और कम्युनिटी कोटा इंट्रोड्यूस कले. तो चंपकम दुराईराजन डिस्पाइट सिक्योरिंग हाई मार्क्स she was denied admission in medical college because the seats allotted for her community quota was filled. जेहेतु तांको पई जतिकी कोटा थिला दैट इज फील्ड अधिक मार्क रखिकी भी तांको एडमिशन पे चांस मिललानी. सो सी फाइल्ड अ रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 सेटा जानत तो रिट पिटिशन यदि सुप्रीम कोर्ट रे करियो देन 32 यदि हाई कोर्ट रे रिट करियो देन 226. आर्टिकल 226 in the Madras High Court asserting that the communal government order violate her fundamental right. कारण फंडामेंटल राइट दुटा जिन थिला गोटे आर्टिकल 15(1) एटा कहउतला कि प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑन रिलीजन ऑन रेस और कास्ट. एटी प्रॉब्लम अछि. एटी देखो एटी कास्ट रे डिस्क्रिमिनेशन नहीं परियोनी बट एटी सीट बंडा होची कास्ट पे आ सेथि पे तांको एडमिशन मिलनी. देन सी आल्सो कोटेड आर्टिकल 29(2) जोथरे को होची कि no denial of admission into state maintained educational institution based on caste or religion. जो institution को state fund करूची से जगह रे caste basis रे किंबा religion basis रे काहा को तुम admission दवा को मना करि परियोनी. So Supreme Court आदरे कोन verdict देले कि the state of Madras defended the quota system by involving article 46. State of Madras article 46 रो सहारा नहीं से कहले कि it is a DPSP directive principle of state policy which direct the state to promote the educational and economic interest of weaker section. Article 46 अच्छे ना weaker section में education institute खोलिया पे कि इकोनॉमिकल तांको केमती they can make more money से प्रकार व्यवस्था करिया पे कोहाई छी. That include scheduled caste and scheduled tribe सेतले SC ST थिला तापर OBC भी असला पछरे. The Supreme Court rejected the state argument and ruled that supremacy of part 3. Supreme Court कौन कहला कि article 46 is a part of DPSP and DPSP is non-justiciable whereas
फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंट एंड एनफोर्सेबल. फंडामेंटल राइट्स है सैक्रोसैंट, ताकू आम कौन प्रकार काटी पारानी एंड इट इज एनफोर्सेबल. तो डीपीएसपी आउ फंडामेंटल राइट भीतर जो भी कन्फ्लिक्ट हम, डीपीएसपी मस्ट रन एज सब्सिडियरी टू फंडामेंटल राइट. द कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर, दिस ऑर्डर जोटा आम ऊपर देखते, द कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर, दिस वन, द कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर was declared void under Article 13 as it classified citizen openly on the basis of caste. Right? It is a case. तो आपको केमिति डिफेंड करागला, the outcome or the strategy to ruled out जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देले ताको बाईपास करिया पई, the invalidation of reservation system created a massive socio-political uproar in Madras. Obviously जेतले कास्ट को नेकी चली पॉलिटिक्स तो बहुत अधिक problems will be created. To bypass the judicial bottleneck and to protect backward class quota, that time PM Nehru introduced the first constitutional amendment act in 1951. तो इतरे कौन कराला दीटा माने गोटे जिंस इंसर्ट कराला आर्टिकल 15(4). कौन सेटा, nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward class of citizen for the scheduled caste. ओके, एससीबीसी हो पारे, शेड्यूल कास्ट हो पारे, शेड्यूल ट्राइब हो पारे, तांको पई जहाँ किसी स्टेट करिया चाहिए फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास पई दे कैन डू इट. तो जदि ए जगह सोशली आ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जोटा एससी एसटी ओबीसी अछंती तांको पई कम्युनल रिजर्वेशन रखा होची, देन इट इज आल्सो परमिटेड. ठीक अछि. सो आज इंडिया सेलिब्रेट 75 years of its constitution, Chambakam Dorai Rajan case stands as the foundational movement that shaped the nation's affirmative action framework. Affirmative action माने जो माने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड अछंती तांको केमिति हमें मेन स्ट्रीम रे नै के आसीबा. It established the permanent structure mechanism of amending the text of constitution to reconcile the tension between formal individual equality and substantive social justice. ठीक अछि. तो एटा म तुमको एथमे देखैली because it was a question that is asked in 2023-24. तो यदि ये वाला क्वेश्चन असला तो हम बैकवर्ड माने बैकग्राउंड सहित you need to write down the answer. Then we will move to the next amendment, जोटा हमर amendment number 2 होगा. Just okay. सरला परे we will go to second amendment, which is 24th Amendment Act of 1971. आम काली एटा भी पढ़िथिले ना, जेतल केशवानंद भारती केस पढ़िथिले, सॉरी नॉट केशवानंद भारती, जेतल हम डॉक्ट्रिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हम कवर करथिले सेतल हम एटा पढ़िथिले. What is the background? The amendment was a direct legislative retaliation of Supreme Court's revolutionary judgment in Goloknath case 1967. In Goloknath, 11-judge bench ruled that Parliament had no power to amend. Eta मन रखियो, Parliament had no power to amend Part 3 of Constitution to abridge or take away fundamental rights, declaring that constitutional amendment under Article 368 were subject to mandate of Article 13(2), which bans laws stripping away fundamental rights. ठीक अछि. Parliament रो पावर को ओके, Parliament पाखरे पावर नाही कि से फंडामेंटल राइट को अमेंड कर परिबे अंडर आर्टिकल 368. दैट इज द बैकग्राउंड. तो तार सिग्निफिकेंस कोन, इट एक्सप्लिसिटली अल्टर्ड आर्टिकल 13 एंड 368. आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को अल्टर करा गला. Declared that Parliament has the absolute power to amend any part of the Constitution, including fundamental right, using its constituent power. जो टसल चलतिला जेतले सुप्रीम कोर्ट रे एमती जजमेंट आसला कि पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड आर्टिकल और नो पावर टू अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स. तो ताकू बाईपास करिया पई किबा पार्लियामेंट को मोर पावरफुल बनाया पई आर्टिकल 13
and Article 368, they are declared, okay, they are altered, and it is declared that Parliament has absolute power to amend any part of the Constitution, including fundamental right, using its constituent power. माने constituent power माने Constitution ताकू जति power देछि से जहाँ चाहिए ताकू से amend कर परिबो. It made it mandatory for the President to give assent to constitutional amendment bill when presented to them. जेतले President पाखरे constituent amendment bill ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ସେ ତାକୁ ଭେଟୋ ଲଗେଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି. He has only one option to give assent. While it aimed to assert total parliamentary sovereignty, it directly set the stage for Keswanand Bharati case 1973, where the Supreme Court ultimately checked the absolute power by discovering the basic structure doctrine. Fine. तापरे आमे देखिबा the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. What is the background? Enacted during the height of national emergency जोटा 1975 रे चलथिला under the Indira Gandhi administration. This amendment is widely known as mini constitution. काहेकि काहेकि बहुत सारा amendment कराइथिला due to its sweeping scope. It was based on recommendation of Soran Singh committee and was explicitly designed to drastically reduce the power of judiciary, institutionalize executive supremacy and decentralize federal authority. तीनटा जिनस ऊपर फोकस कराइथिला जुडिशियरी पावर को कम करिवा आउ एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी को बढ़ाइबा एंड जो फेडरल अथॉरिटी अछि ताको सेंट्रलाइज करिवा. The significance was it altered the preamble alter हेतला कोन मिस्तिला socialist secular and integrity एटा हम सब जानि जंदी preamble रे socialist secular और integrity मिस्तिला inserted part IV hela DPSP IVA hela कोन fundamental duties and it has article number 51A. It drastically curtailed judicial review by introducing article 323A and 323B. It drastically curtailed judicial review by introducing article 323A, 323B. That is 323B is for tribunals and stated that no constitutional amendment could be questioned in any court. ठीक अछि से कहले कि जहाँ भी constitutional amendment होबो that cannot be questioned in any court. Fine. It shifted 5 subjects including forest from state list to concurrent list. State list to concurrent list को नहीं गले. Most of its text aimed at institutionalizing authoritarian control was subsequently rolled back by the 44th constitutional amendment. बहुत सारे जिनस अछि चेंज कराइतला अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करिया पे अथॉरिटेरियन रिजिम को एस्टैब्लिश करिया पे बहुत चेष्टा कराइतला जेतले सरकार चेंज होला in 1978 जेतले जनता गवर्नमेंट आसला they again bring the 44th constitutional amendment act in 1978 जोटा कि बहुत सारा जिनस जोटा 42nd रे कराइतला ताको रोल बैक कर दिया गला. So now we'll study the 44th constitutional amendment act of 1978. What is the background? Following the lifting of emergency जेतले सरीगला the newly elected Janata Party government brought forth this amendment to restore the democratic equilibrium, revitalize civil liberty and erect institutional safeguards. तीनटा जिनस पई डेमोक्रेटिक इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करिया पई रिस्टोर करिया पई सिविल जो लिबर्टी अछि ताकू रिवाइटलाइज करिया पई एंड इरेक्ट इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स अगेंस्ट फ्यूचर अब्यूज ऑफ पावर or abuse of emergency provisions. It sought to systematically dismantle the authoritarian feature injected to the constitutional framework by 42nd amendment. 42nd amendment किछि जिंस रखि दिया गला जेमति सोरेन सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन रे जेमति रहिला तमर फंडामेंटल ड्यूटीज सेटा चेंज हेलानी जेमति हमर प्रिएम्बल ले सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ऐड कराइतला दैट इज आल्सो देयर बट जोटा माने अथॉरिटेरियन रेजिम को एस्टैब्लिश करिया पई किछि अमेंडमेंट कराइतला दैट इज रोल्ड बैक. The significance is
it fundamentally altered the emergency architecture under Article 352 by substituting the term internal disturbance with armed rebellion. Article 352 रे जो इमरजेंसी अच्छी 42nd 44th अमेंडमेंट रे कर दिया गला कि इंटरनल डिस्टर्बेंस देश रे इमरजेंसी लगी परिबो नै जोटा कि इंदिरा गांधी इंटरनल डिस्टर्बेंस कहि कि लगैथिले ता जगह रे एटा को रिप्लेस करके कर दिया गला आर्म्ड रिबेलियन जदि केबे देश रे आर्म्ड रिबेलियन होची माने बहुत अधिक रिबेलियन होबो having the guns having माने डिफरेंट ओके गन हो गला राइफल हो गला किछि भी जदि किछि आर्म नै कि से माने रिवोल्यूशन करचंदी रिबेल करचंदी then only the state can declare national emergency and mandating that emergency can only be declared via the written advice of entire cabinet. Okay, this is a very famous case जेतले इंदिरा गांधी जाइथिले इमरजेंसी माने करिया पई से प्रेसिडेंट को कहले प्रेसिडेंट एट दैट टाइम वाज आई गेस मुझे पढ़ी से माने बाथरूम रे थिले ओके तांको आगला से कहले यस ना तो कैबिनेट अप्रूवल थिला ना तो माने से लिखिकी देथिले बट कथा कथा हे गला तो सेति में माने आगु को जाई के इन सब प्रॉब्लम न हो एम जिंस रिपीट न हो ता पई चेंज करी कर दिया गला द इमरजेंसी कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड via the written advice of the entire cabinet रो सब मेंबर सब मिनिस्टर जदि लिखिकी देबे then only emergency can be applied. Crucially, it ruled that Article 20, that is protection in respect of conviction, and Article 21, right to life and liberty, cannot be suspended even during a national emergency. Article 20, 21 तमरो सेमिति इंटैक्ट रहइबो जोटा protection in respect of conviction ଆଉ right to life and liberty that cannot be suspended even during the emergency. Furthermore, is stripped the right to property को चेंज कर दिया गला फ्रॉम पार्ट 3 ला तमरो फंडामेंटल राइट रु एटा को हटै की downgrading it to a mere legal or constitutional right under Article 300A. ठीक अछि सो एटाला चारटा अमेंडमेंट तापर फिफ्थ थी जोटा 52nd then 73 and 74th then 86th 101st 103 and 106. Okay, so we will stop the lecture here. In the next lecture we will study the other amendments. Thanks for watching the lecture. Have a great day.